Good morning, students. Today we are going to continue the topic force, work, and energy. First, let us recall what we had learned in last class. We had words about the types of forces like muscular force, gravitational force, magnetic force, and frictional force. Let us recall about muscular force. Humans and animals use muscular force to do work. We use muscles to squeeze a lemon or to lift a book. Horses use their muscles to pull a cart. Elephants use their muscles to push logs. So, the force applied by horses, elephants, and by human being is called muscular force. Now, gravitational force, the force with which the earth pulls an object towards itself, is called gravity or gravitational force. We are on ground because of gravitational force only. It pulls us down, otherwise we would be flying and floating in the air. Then magnetic force, magnet can pull certain materials. The force exerted by a magnet on any iron object is called magnetic force. Then frictional force, a force called friction, always acts in direction opposite to the motion. If the ball moves a greater distance on a smooth surface like floor than on a rough surface like grass, because frictional force is less on a floor as compared to the grass. In fact, we can walk because of friction only. It prevents us from slipping. Wet surface decreases the friction between the sole of our shoe and the floor, so we slip on the floor. Now today we are going to talk about work. What do you mean by a work? Work is said to be done if the force applied on an object results in changing the position of the object. वर्क तभी होगा जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे और ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन जो है, पोजीशन जो है, चेंज हो जाएगी. अगर वो पोजीशन चेंज नहीं करेगा तो हमारा वर्क नहीं हुआ. अगर पोजीशन चेंज होगी देन ओनली वर्क इज सेड टू बी डन. फाइन. इज वर्क डन व्हेन वी पुल और कैरी अ स्मॉल बकेट ऑफ वाटर. अगर हम स्मॉल बकेट ऑफ वाटर को कैरी करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, तो वर्क होता है. यस. Is work done when we pull a 100 kg sack of rice from one place to another. अगर हम एक 100 kg की राइस की बोरी को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं तो वर्क डन हो रहा है, क्योंकि हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उसकी पोजीशन जो है चेंज हो रही है. नाउ एनर्जी व्हेन वी रन और वी डू वर्क. टू रन we need energy. This energy comes from the food we eat. To do work, the energy is required that comes from the food. Energy can be defined as the ability to do work. Energy क्या है? कैपेसिटी हमारी क्या है काम करने की, या एबिलिटी क्या है, दैट इज एनर्जी. एनर्जी, these are different forms of energy and that enable different kinds of work to be done, like electrical energy, heat energy, wind energy, solar energy, etc. In electrical energy is used to move machines like fans, electric motors, tube wells and other electrical machines in the factories. Electrical energy मतलब जो electricity से generate हो रही है, that is electrical energy. Heat energy is used for cooking food. हमें heat energy किस लिए यूज़ होती है? food को cook करने के लिए. It keeps our room warm in winter. The sun also provides us heat energy. वाटर चेंजेस टू वाटर वेपर ड्यू टू दिस हीट. हीट के कारण वाटर जो है वाटर वेपर्स में चेंज हो जाता है. नाउ विंड एनर्जी एंड वाटर एनर्जी. विंड एनर्जी इज यूज टू मेक इलेक्ट्रिसिटी थ्रू विंड मिल्स. ऑल्सो इन डैम्स द एनर्जी ऑफ मूविंग वाटर इज यूज टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी. और सोलर एनर्जी. द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ. प्लांट एब्जॉर्ब द लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन एंड प्रोड्यूस फूड. प्लांट्स जो एब्जॉर्ब करते हैं सनलाइट की एनर्जी और उसको फूड प्रोड्यूस करते हैं. इस फूड को हम लोग खाते हैं. ये फूड जो है हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है. सो सन की एनर्जी जो है चेंज हो जाती है फूड में एंड दैट गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क. These days, solar energy is being used in many gadgets to replace electrical energy like geysers, street lights, etc. Now, fuels. Vehicles like car, buses, motorcycle, train, etc. require fuel to move. लाइक पेट्रोल, डीजल एंड CNG. अगर हमारी गाड़ी में
कार में, बसेस में, स्कूटर्स में अगर पेट्रोल, सीएनजी या डीजल नहीं होगा तो वो चलेंगी नहीं. CNG is compressed natural gas and these fuels we obtain from petroleum. पेट्रोलियम जो है बहुत अर्थ के बहुत डीप में फाइंड आउट होता है. इन सम प्लेसेस इट इज़ obtained by digging of the earth under the seabed. In our country, large quantity of petroleum are found under the seabed of Arabian Sea near Mumbai. Cooking gas, or which is called LPG, liquefied petroleum gas, is also obtained from petroleum. These resources are called non-renewable resources of energy. Uncontrolled use of these resources is a major cause of worry. Non-renewable resources are the resources like LPG, petrol, diesel, CNG, etc. And we should use all these in wise manner. इनको अच्छे से हमें वाइजली उन्हें यूज़ करना चाहिए क्योंकि ये जो है एबंडेंट नहीं है और ये ख़त्म हो जाएंगे. नाउ coal is important fuel for domestic and industrial use. Coal is burned to convert water into steam which runs turbines to produce electricity. It is called thermal energy. Coal mines are mainly located in Bihar, Jharkhand, West Bengal. In our country, coal too is a non-renewable source of energy and needs to be used with care. The resources like water, wind and sun are renewable resources as these are available in abundance. वाटर, विंड और सन जो ये रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, ये अबंडेंस में हैं हमारे यहाँ पे. फॉर एनर्जी रिक्वायरमेंट द एनर्जी शुड डिपेंड ऑन दीज रीन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी. They are available in plenty and are free of cost. Also these form of energy do not pollute the environment और ये environment को pollute भी नहीं करते. Thank you everyone.